Today, I have come back with the concept of sound and silence in my life, in all of your life. The first reference of sound and silence in deepest term was experienced by me when I was 5 years plus. My grandfather, Swamiji Satyanand Saraswati, has expired that time. With lot of insistence, I could go to the cremation ground. I'm talking about sound and silence, yes. In the cremation ground, I found all are silent, and this silence was very conspicuous. This was silence of the death. Yes, he was sannyasi in his last phase of a decade or so. He was a disciple of Swami Saraswati ji of Rishikesh. I didn't know much. I did only know my grandmother, who was another sannyasi of Vaishnav cult, was incidentally there to blowing the conch for that last departure of my grandfather. Now, what I'm talking about, silence and sound. This was a build-up for me of the sound and silence. And there, when everybody was silent, people were piling up the pyre, and the pyre was lit. I was not very aware of the whole thing, but I was just 5 years plus. I was remembering how the pyre was being burned with the silence, a very conspicuous silence around, with some spark and some burst of the body being burnt. And that I was experiencing, that in the deepest of the silence, and silence in the deepest of the sorrow, there was burst of पट 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 आवाज आ रही थी, जैसे मानो बॉडी का हिस्सा जल रहा हो और एक एक अपना अंतिम आर्तनाद करते हुए चल रहा है, वो sound and silence. I was remembering that sound and silence for quite a long. मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटा हुआ होगा या 4 घंटा हुआ होगा. यमुना के किनारे अंधेरे में वो साउंड एंड साइलेंस और सब चुप, वो सुनता रहा मैं. वो लकड़ी का जलना और वो आवाज सुनता रहा मैं. मुझे ना कुछ एहसास हुआ कि here is the play of sound and silence. Here something cosmic is happening which I am not aware, because my mind was 5.5. I had no idea what the world about dying, burning, and what all. But I was realizing, yes, there was spark of sound and silence when one departs. It was
It may be awful for who departs, but it is also a realization for the person, with every sound coming in its own dynamic in a very purposeful way, and then talking in silence. This was my beginning of understanding sound and silence in my life. Later, uh, when I luckily got Diksha in Sri Ram Sharanam under Maharishi Dr. Vishwamitraji Maharaj, I realized many aspects of sound and silence. And the first book I wrote was this, Ram Naam, Theme and Thoughts. This was the first book, and here I'm just putting the foreword or sadhuvad of Maharshi Dr. Vishwamitraji, who gave me the training of sound and silence. This is the sadhuvad he wrote, and it was 21st May 2000, New Delhi. He signed this. I'm reading out the portion out of it to make you realize what exactly he meant to me. He said, our Baba, Swamiji Satyanandaji Maharaj, was given the most powerful creative mantra by Param Guru Sri Ram himself on the celestial Guru Purnima. Then Swamiji Maharaj revealed its essence of Ram Naam Sadhak and encoded them textually in Sri Amritvani, Sri Bhakti Prakash, and in his other writings like Pravachan Piyush. Since ever, Ram Naam manifested as thousands of lotus in the hearts of sadhaks. Understanding each petal of this cosmic lotus called Ram Naam is calling of every sadhak. Ram Naam remains the mode of sadhana and destiny as well. This Dr. Vishwamitraji is telling. I'm reading from his Sadhuvat, which he wrote on 21st May 2000. Gautam, in his 101 Ram Naam theme and thought, has begun with the Ram Naam vision and concluded his exposition with Viraha, encompassing 99 thought-provoking titles in between. A figure of 101 is considered highly auspicious in Hindu mythology. He has covered 101 theme of 101 pages. A page a day will make sadhak a sadhaks. I congratulate Gautam ji for the notable revelations on Ram Naam, which, when contemplated by sadhak, will bring them peace and bliss. Well, this is the beginning of my journey of realizing Ram Naam Sadhana. Ram Naam Sadhana is the core of your persona, is core of your manifestation, is core of your evolution, and is core of positive mantra as well. So, I will
try to work out on this theme today. I am talking. I started with the silence and the sporadic sounds from the silence of sorrow in the graveyard or in the cremation ground. And from there, I am taking you where Swamiji Maharaj himself got the Diksha from Param Guru Sri Ram, because Swamiji Maharaj himself said, right, Param Guru Ram himself gave him Diksha, and with sound and silence. Because if we are talking about sound and silence and realizing its essence, we need to realize the concept of Ram Nam Sadhana, how Swamiji Maharaj must have got an idea. So I begin with the Diksha. I am going to read out from the passage of 101 Ram Nam Theme and Thought, where I try to revisit Swamiji Maharaj's timeline and realize how Ram Nam Sadhana actually laid the foundation of sound and silence. Let me read out from the passage. Sri Ram, the Jyoti and the sound. Swamiji Satyanandaji Maharaj was meditating at Dalhousie in search of spiritual being. It was Vyas Purnima. The destined hour became a date with Param Guru, being Guru Purnima. Ramdhun, the sound of Ram, besieged the valley of the silence and emitted from nowhere. None the mortals sang as. That was part of the spiritual and celestial happening. It was Akashvani, and the Jyoti appeared with the subsequent plea of Swamiji. It was hour of enlightenment, as unknown was known, as dynamics of Ram got spelled out beyond the mythological character and the rupa of the cosmic order, emitted through the silence of Jyot, yet powered with the acoustic vibration. Swamiji spread the message of eternity, and through Ram Nam Sadhana, the final resort of emancipation, was a salvation mode for final refuge. This was the beginning of sound and silence for me in most academic way and in most prudent way of realizing what was sound and what was silence for me. Now, I want to understand what was the happening uh, in the creation of Sri Adhishtanji, because that was also part of the sound and silence. If you realize this, then we go ahead. So I just touch upon that. Sri Adhishtanji. Sri Ram dwells in the philosophy of Advaitavad and remains an icon of Nirakar, formless kind. Swamiji Maharaj could even iconize the formless of Sri Ram in Sri Adhishtanji. Sri Adhishtanji is cosmos himself, the spiritual sun, the encoded within with the touch of solar radiance, yet further within, Ram is scripted, which sounds aloud within silence of sound. The light of the sound denotes the mode and the path of emancipation. The hymning swastika of four quarters of universe remains the benefic borders of human spiritual endeavor.
The blooming lotus beneath indicates salvation, and the nirvana at the manifestive level of spiritual emancipation with the Ram Nam Yajna. Here the sound becomes a visual. Now I go further. The sacred sound of Ram. I read out Ram Ram, when uttered with utmost Shraddha, the mind gets smeared with the sacred sound of Sri Ram. One finds the abode of Sri Ram, which dwells nowhere but in the very name of Ram Nam, when the sound of silence of japa occurs. That is the Mangalic universe. Sri Ram is prevailing, who shows the bliss. He troubles the shooters, for the monks we are. Yet his name, the light and salvation glows. His Mangalic, as the utterance of Ram Nam, remains the sheer anchor for the sadhak. We are coursing through the process of realizing Ram Nam and the sound and silence before we go further to realize what is the sonic icon. Now, in one of the passage, it was got written through me, internalization of purification. Once we install the sonic Ram, Sri Ram in our heart, we thus endeavor the self-cleansing process. The limitation of double face and duality of character get destroyed. Chitta Suddhi remains the goal of sadhak, banishing the anger, diminishing the lust, and nurturing love begins the purification within. The pious inner core flashes, and the fragrance of sacred kind. The purification comes to the direct linkages with the God, with seated within the name of Sachidanand. Here we begin the journey. Another passage I was got written. Shri Ram around you. Yes, Shri Ram is around you. How? As the acoustic vibration revolves in the body, Ram Nam resounds as resonance with Sri Ram, whose abode is within you. His he watches all our endeavor, all our activities. So you behave, you are in the presence of everyone. He swings and feels when sadhak nurtures aberrations. Yes, he is watching you. This Sri Ram, in the witness, he is the guide and the goal as well. So feel him around the same and seek the guidance. Then you would realize the dynamic of Ram Nam, the eternal spiritual board that ferries to the final abode. Yes, this is the journey of sound and the Ram Nam. Now, experiencing the power of Ram Nam. How? Look at this. Life is full of craving, with its attending tensions. It disturbs the physical and mental health. Ram Nam remains the spiritual medication.
Swamiji and Gurudev have told us again, time and again. It so happened on 19th January 2000, I had a stroke of cerebral kind. Causative factor remains my brain hernia from the frontal sinus. I incorporated millions of electrons raining down my head as I was sleeping into coma. Nevertheless, spread all over my body, left with the feeling of getting paralyzed. I had no access to medicine as it was too late of the night. Yet emergency hospital treatment was unaffordable for me. I left myself to Sri Ram, and Ram Nam chanting went on within an involuntary fashion. I forgot the time and space. I felt myself semi-dead as the body was fast turning into bundles of nerves. But after hours of ordeal, I could open up my eyes. I got the strength to lift my hands and legs. Chanting of Ram Nam went on. I slept with I know not. I got up when I was not mourned. The whole body passed by as if in trance. Physically, my chest pain was on. My continued Ram Nam Simran. Finally, I slept. I had to wake up again. My mind and body was no pain. I took no medicine during 72 hours of ordeal. Yet I got myself recovered within the spiritual medication of Ram Nam. That is why what I faithfully feel. This is the Ram Nam and the power of sound and silence. I am telling you this to realize yourself in some part of your depression, frustration. You can lend yourself to a divine alternative. I wrote another poem, Sonic Sri Ram. Sonic, sound. Ram is sound. Sri Ram, omnipotent and omnipresent. He is beyond the icon, time and space. He is Arupa, yet Jyoti remains. His true identity. Sri Ram is above all the nature, so he is Nirguna, so he is merciful and caring. He remains for all to take refuge in him. Through rituals of worship, with flower and food, he need not to be reached. He is accessible through japa, simran, and kirtan. So simply, so simple is Sri Ram. Complex surrender to him in acoustic silence with Param Bhava would please him, and he distances uh, none so rich, poor in the helpless sinner. He resides within you. Just you remember, he is within you. And finally, what is silence called sound, which I am now talking about? Silence is sound. It is nothing mystic. When sound loses its pitches, the echo fades, the silence peeps out within Ram Nam Jap, allows the experience. The Sri Ram resides in the sanctum sanctorium of heart, hemmed with the silence,
and state of mind, sans chaos of sound, in the significant aspect of sadhana satsang. I wish I could be I could be able to fathom the frequency of anhat and the soundlessness of the sound of the celestial communication. Friends, now I get into the concept. This is the indication of my foundation. The sound you love, the soundlessness you love. It is mortal, it is immortal. Anhad Ram is inaudible by our ears, but it is the sound of the celestial sphere. NASA has documented those inaudible sound and made them audible for us also. Saregama was part of that celestial Anhad. Ram is Anhad. Ram is unstruck. What we hear is Nad, Ram Nad. Now, we have to understand this Nad and Anhad both empowers us, which is one is audible, one is inaudible, but fathomable by the light. There is eternal silence within silence. और साइलेंस आपको बहुत डराता है. मैं आपको कहूं कि विरह बहुत अच्छी बात है बोलने के लिए, लेकिन विरह भोग करना अपने आप में बहुत कष्ट है. आनंद नहीं है, सुख नहीं है, वो एक भोग है. और फिर जब आप अनहद को सोचते हैं, अनहद को समझते हैं कि सारी सृष्टि का जो एक मूवमेंट है, एक फिजिकल मूवमेंट है, उसका एक अनस्ट्रक मतलब नॉन क्रिएटेड साउंड है. अनक्रिएटेड साउंड इज अनहद. अनहद टू माय माइंड इज also light and enlightenment. Keeping all this in mind, if you look at your own life, you will realize आपके जीवन में नाद अनहद का एक बहुत बड़ा रोल है. जो नाद में सृष्टि को समझ आता है, जो नाद में आपका इष्ट का प्यार समझ आता है, जो नाद में आपको अंतिष्ट का मतलब जो अंतिष्ट का मैं जो मैंने शमशान का साउंड बताया था, वो फट फट करके बजना और वो लकड़ी जलना और शरीर जलना, उसका साउंड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक भैरवी के लिए एक अनर्थ, एक बहुत डीप साइलेंस का साउंड होता है. ये साउंड हमें बिखरता नहीं है, ये साउंड हमें बांधता है. ये साउंड को अगर हम समझे, इस ध्वनि को हम अगर समझे, तो ध्वनि से सृष्टि का आरंभ होता है, चैतन्य का आरंभ होता है. चैतन्य भी अपने आप में एक सृष्टि का कारण है. इस चैतन्य को समझने के लिए हमें साउंड एंड साइलेंस को समझना है. याद करिए, अचानक 10 बजे रात को आप टीवी देख रहे हैं, टीवी का आवाज बहुत जोर हो गया. अरे आपने तो जोर नहीं किया, फिर क्या हुआ कि उस टाइम साइलेंस फॉल किया और टीवी का आवाज जोर लगने लगा. अगर लाइट जला हुआ है, टीवी चल रहा है, घर पे लोग जन हैं, अचानक लाइट चली गई, तो अचानक एक साइलेंस आ जाता है. वो कौन सा साइलेंस है? जो ट्यूबलाइट जलने का, टीवी चलने का, साउंड का,
या सिर्फ लाइट का जो जल रहा है आर्टिफिशियली उसका साइलेंस है। Now we have to understand this sound and silence in our body. हमारे शरीर में फॉर्मलेस मतलब बिना फॉर्म का एक साउंड आइकॉन है जो सृष्टि के अनुरूप है और सृष्टि के प्रतिकूल है, जो चैतन्य भाव का समस्त ज्ञान का अनुरूप है। वो आपके अनंत में वास करता है। आपके शरीर जाने तक वो आपके शरीर में है। उसके लिए आपको दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। उस शांति को समझे, उस ट्रैंक्विलिटी को समझे, तो आपके जीवन में विकास में, विकार में बहुत फर्क आएगा। क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द साउंड एंड साइलेंस। साउंड अपने आप में एक बहुत बड़ा कैओस है। जैसे सोचिए आप अभी क्या सोच रहे हैं। अभी आप एक साथ 4-5 चीज सोच रहे हैं। जब ये 4-5 चीज सिर्फ सोच रहे हैं, आपके मन में ये एक साउंड का कैओस है। उसमें से उभर के आपको साइलेंस पे लाना है। आपको विलीन होना है उस साइलेंस पे जो सृष्टि का साइलेंस है, जो सृष्टि के पूर्व में इच्छा का साइलेंस है। क्योंकि इच्छा से सृष्टि हुई है, सृष्टि फिर मैनिफेस्ट किया है। तो आपको ये लेवल पे आपको साउंड और साइलेंस को समझना है। साउंड और साइलेंस अपने आप पे कोई कंपार्टमेंट नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है। वाक एक जगह जाके छुप जाती है। चिंतन अपने आप पे एक खामोशी है, लेकिन चिंतन की भी एक स्वभाव है, वो अपने आप पे एक कैओस भी है। तो आपके चिंतन की शैली को ट्रैंक्विल करना है और आपके मन को भी स्थिर करना है। मन को जब स्थिर कर पाएंगे तब आप सोचेंगे, मन में भाव जो है वो सिर्फ राम के प्रति अनुरूप होता जा रहा है। जब राम के प्रति अनुरूप होता जा रहा है तो आपका विलीन होता जा रहा है उसी शब्द में, उसी भाव में। अगर उस भाव में अगर आ जाए, यू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग योर कैओस ऑफ योर साउंड। क्योंकि सृष्टि तो साउंड से हुआ है। पता है, बच्चे की बच्चा जब आप कोई महिला के शरीर में जन्म लेता है, पहला जो चीज बनती है वो है कान। और कान का सिंबॉलिक मीनिंग है साउंड। और ये साउंड की सृष्टि को हमें समझना है। चाहे गायन में है, गीत में है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट में है, चाहे हमारे वाक में है। इस साउंड और साइलेंस के इंटरप्ले को अगर हम समझ ले तो हम बहुत से मामले में अपने को संभाल पाएंगे। इस संभालने का आखिरी अंदेशा क्या है? ये साउंड एंड साइलेंस को अगर हम समझ पाएंगे तो हम संतुष्टि को भी समझ पाएंगे। अगर हम संतुष्टि को एक लेवल पे अपने जीवन में उतार पाएंगे तो हमारी खामोशी किसी की हनन करने की इच्छा नहीं करेगी। हमारी खामोशी किसी के लिए प्रेयर बन जाएगी, किसी के लिए एक प्रार्थना बन जाएगी। हमारी खामोशी अपने आप पे दुनिया को जोड़ती रहेगी। आपको कुछ मिला नहीं मिला, आप दुनिया को क्या से दे सकते हैं? वो आपकी खामोशी और साइलेंस से दे सकते हैं। बातें तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन साइलेंस में जब प्रेयर होता है तब आप सब कुछ दान कर सकते हैं। अब पॉजिटिव मंत्रा में इसी साइलेंस को इवॉल्व करके आपका एम्पावरमेंट होता है। आप में शक्ति चैन बनती है।
आप में एक बहुत सर्वशक्ति का विराट रूप आपके अंदर आता है। आप जब इस साइलेंस एंड साउंड को समझते हैं, जब इस साइलेंस एंड साउंड को जीवन की अनुरूप उतार पाएंगे, तब आप समझेंगे कि सृष्टि जो है, विश्व जो है, वो एक साउंड से हुआ था। और सृष्टि का विलीन जो है, सृष्टि का जो संस्कार है, वो साइलेंस पे ही चलता है। आप किसी को प्यार करते हैं, आप किसी को सम्मान करते हैं, आप किसी को के लिए बहुत आदर सम्मान रखते हैं मन में, और वो सब आप बोलते नहीं हैं, वो सब आपके साइलेंट प्रेयर से निकलता है। इस साइलेंट प्रेयर को अगर आप समझें, तो ये जीवन को बहुत बदल सकता है, और ये जीवन को नया रूप दे सकता है, हमारे कर्म को सुधार सकता है, हमारे वाक और जो एबरेशन है, हमारे जो गलतियां हैं, उससे सुधार सकता है। वाक में एक मधुरता ला सकती है, और साइलेंस में एक प्यार से एक नया सवेरा बना सकता है। When that is the power of silence, and silence is divine, and this silence can be realized right from Shri स्वामी जी महाराज, सत्यानंद जी महाराज श्री के चरणों में बैठ के, गुरुओं के चरणों में बैठ के, अगर हम इस शांतमय ये साइलेंस को, ये बहुत डीप डीप साइलेंस को समझें, ये विरह है, बहुत भयंकर है। मतलब मैं साइलेंस आइसोलेशन में बहुत भयंकर होता है। आप में वो शक्ति होनी चाहिए कि उस भयंकर भाव को आप स्थापित करें। यहाँ पे आनंद मतलब खुशी नहीं, आनंद मतलब दुखी नहीं, आनंद मतलब एक भाव में विलीन विलीन होने का तरीका होता है। और वो साउंड एंड साइलेंस से आप सारी दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने साइलेंट प्रेयर से दुनिया को बहुत जोड़ सकते हैं। उसमें अहम नहीं होता है, उसमें ईश्वर रहता है, ईश्वर की ही सृष्टि है ये साइंस ऑफ साउंड एंड साइलेंस। इतना ही आज कहना था। राम राम, प्रणाम आप लोगों को, आपके श्री चरणों को प्रणाम।